and enables your muscles to pick things up. Our objectives are to study the sliding filament model of muscle contraction, the chemical processes involved in muscle contraction. In the human body, the muscular system consists of numerous muscles. Each muscle consists of bundles of muscle fibers, and each fiber is composed of numerous cylindrical subunits called myofibrils. A closer look at a sectional view of the myofibril shows the presence of myofilaments that are of two types, namely actin and myosin. The मायोफिलामेंट के दो टाइप, एक्टिन और मायोसिन. बिल्कुल, मायोफिलामेंट के दो टाइप, एक्टिन मायोसिन. इसमें मायोसिन के पास में हेड रहता है अपना, ठीक है. Filament is thick and made up of bundles of flexible myosin molecules. उसमें दो हेवी चेन रहती है और चार लाइट चेन रहती है. आपने देखे थे ना, ठीक है. तो उसके जो हेवी चेन रहती है वही जो उसका एंड रहता है वही गुप कर ऐसा हेड बनाया था उसका. Each having a rounded head which points outwards. The actin filament is thin. समझ में आ रहा है तुमको? दो देखो, दो वो है एक्टिन फिलामेंट है जो हेलिकली राउंड कर दिए, साथ साथ दो मायोसिन दिख रहे हैं, और जो मायोसिन के ऊपर फिर कौन मौजूद है? ट्रोपोमायोसिन. लेकिन वो क्या कर रहा है, जो एक्टिन की बाइंडिंग साइड उसको छुपा रहा है. जहाँ पर वो and consists of two ट्रोपोनिन क्या कर रहा है, एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइड मौजूद है तो उसको क्या कर रहा है, हाइड कर दे रहा हूँ. समझे? strands of actin protein molecule. ये एनसीईआरटी क्या बोलती है? हाँ सॉरी, देखो ये जो ट्रोपोनिन है ना, ट्रोपोनिन वो प्रेजेंट तो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है, वो छुपा रहा है साइट, जो बाइंडिंग साइट है. ये जो है ना, ये अपने ये फॉर एग्जांपल ये हेड है, बाइंडिंग साइड छुपा रहा है. हाँ, बाइंडिंग साइड छुपा है. ये इसकी क्या बोले, मायोसिन को जुड़ने की जो बाइंडिंग साइड है ना, मायोसिन और एक्टिन जब जुड़ते हैं ना आगे, अब वो दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से जुड़ते हैं. ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है ना, क्या फिलामेंट? देखो उसके ऊपर के ऊपर है. एक्टिन के ऊपर है ना? नहीं. हाँ, एक्टिन के ऊपर है वो जो साइड है ना, एक्टिन के ऊपर है वो, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर नहीं. फिलामेंटस एक्टिन के ऊपर. हाँ बिल्कुल, फिलामेंट के नीचे ट्रोपोनिन है. हाँ, ट्रोपोनिन के नीचे और ट्रोपोमायोसिन के भी नीचे हो, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है उसको? सिंपल देखो, अगर ये धागा है ना, ये धागा तो कभी हट जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर वजन रखा हुआ है उसी ने क्या करके छुपा के रखा उसको. धागे को सरका के घुस जाएंगे ना वो, ऐसा भी तो हो सकता है ना. मतलब एक तरह से वो जो साइड है वो फिलामेंटस एक्टिन के ऊपर है. बिल्कुल. लेकिन ऐसा हो सकता है अगर तुमने वजन हटा दिए तो धागा भी सरक जाएगा. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. Loosely wrapped around each other. Let us now observe the process of myofilament contraction. During the process of muscle contraction, the head of the myosin moves and attaches itself to the actin filament. The myosin bends backwards and the actin is pulled in towards the center. As a result, ये कहीं नहीं जाता. ये जो इलास्टिक रहती है ना, इसलिए बोले थे अपन कि एज जेड लाइन इलास्टिक रहती है, वो जेड लाइन को नजदीक खींच लेता हूँ. actin filament slides past the myosin filament. One after another, the myosin heads attach to the actin filament and the actin filament keeps sliding on the myosin filament. This is the sliding filament model. With the actin filaments being pulled inwards in one direction, the ends of the sarcomere are pulled closer, thus shortening the muscle fiber. To understand the chemical process of muscle contraction, we will focus on a myosin filament. The heads of the myosin filament attach to the actin, but the attachment sites on the actin are blocked by a rod देखो दोनों के जरिए ब्लॉक है, धागा भी है, उसके ऊपर वजन भी रखा है. shaped protein called tropomyosin. Tropomyosin shows ट्रोपोमायोसिन से बाइंड नहीं हो, ट्रोपोमायोसिन ने ढाका नहीं, उसको ट्रोपोनिन ने ढाका बोलते हैं. एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन इज मार्क्स बाय कवर बाय ट्रोपोनिन. देखो यहाँ पर क्या बोलती है, देखो बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट क्या है, इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन बोला उसने. कौन बोला? ट्रोपोनिन छुपा रही है उसको, यानी ऐसे वो है धागा, उसके ऊपर अपना वो धागा रखा है, उसके ऊपर वजन रख दिया अपने, तो वो वजन क्या है, उस वजह से वो साइड छुपी हुई.
ऐसा मतलब मतलब जो एक्टिन की एक्टिव बाइंडिंग साइट है, एक्टिन की जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है उसको ट्रोपोनिन ने हाँ एक्चुअल में उसको छुपा के ट्रोपोनिन रखा। ने छुपा कर, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन भी है, फिर उसके ऊपर ट्रोपोनिन है, लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं कि ट्रोपोनिन की वजह से वो छुपी हुई है। एक्टिव बाइंडिंग साइट किस एक्टिन की है ना, हाँ बिल्कुल फिलामेंटस फॉर एक्टिन की। मायोसिन मायोसिन क्या मायोसिन के वास्ते अब The presence of another protein known as troponin. To देखो समझ में आ रहा है तुमको, छोटे छोटे सुराख दिख रहे थे यहाँ पर। initiate the process of contraction, the calcium ions bind to the troponin molecule. This forms दिख रहा सुराख सुराख दिख रहे थे यहाँ पर, दिख रहे ना, वही active the calcium troponin tropomyosin complex and causes the complex to shift away from the attachment sites of the actin molecule. ये जी हटाओ देखो, हाँ वो घूम कर देखो कैसा खुल गया जुड़ने की साइड ऐसा। The ATP molecule binds to the myosin head. The hydrolysis of this ATP gives energy to the myosin head to attach itself to the active site of the actin filament. उसको लगा, Finally, उसको the ATP लगी। myosin pulls the actin filament and ADP and phosphate molecules are released. Another ATP molecule attaches to the myosin head and results in its dissociation from the actin filament. Calcium ions are released and the tropomyosin returns to its normal position where it again blocks the attachment sites of the actin myofibrils. Thus, the myofibril regains its relaxed position. In मतलब कैल्शियम आयन आएंगे उसको वो